Yes, so like I was saying that I'm Manish Sanghai from Mumbai and not a medical doctor. I wanted to become a medical doctor, but life had some other plans. I became a businessman, a yoga teacher, then a health coach, and now I'm doing certain courses to like get certification from the US. And today's class is about what I'm learning at Cornell University. So it's a e-Cornell, it's an online medium through which Cornell teaches many things. So I have selected a course. This is about health and nutrition. It's a mix of health and nutrition where they teach us the logic behind what is happening with nutrition, with diet, with various other things. And this month I'm learning about energy and the role of carbohydrates. Okay. So मुझे लगा क्या है एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट स्कूल में सीखा है व्हाट्स द डीप साइंस बिहाइंड दिस इट्स नॉट rocket science. I know everything what is carbs, what is proteins, what is fats, but they linked this with diabetes. Okay, that how the energy metabolism मतलब कि हमारी बॉडी, I'll use हिंदी also so that we have many हिंदी speaking people with us, कि हम जो खाते हैं, हम तो खा रहे हैं रोटी सब्जी दाल चावल या हम जो भी खाए हम, ओके, फ्रूट्स या मीट या मिल्क जो भी हम लेते हैं, बॉडी उसको कैसे कन्वर्ट करता है? बॉडी को थोड़ी पता है कि उसमें कितना कार्ब्स है कितना प्रोटीन है, हाउ डज दे मेटाबोलाइज, इसको बोलते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको। ओके, तो हाउ इज फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेस क्लास? पहले हम पर्पस समझते हैं। आज का पर्पस क्या है? आज का पर्पस कोई डायग्नोसिस करना नहीं है, तो प्लीज कोई बीमारी का इलाज करना नहीं है। आज खाली मुझे नॉलेज स्प्रेड करना है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उससे कैसे हमें बीमारी आ रही है, कैसे हम बीमार पड़ते हैं उससे। Okay, so please don't stop any medications on your own, and especially people with diabetes. Okay, जो diabetes की दवाइयाँ ले रहे हैं, don't go any extreme diet, be it intermittent fasting or anything. Don't go very मतलब कि radical change मत करिए अपने आप डाइट में या डाइट प्लान में या मील टाइमिंग में। Always consult a doctor or a health coach or someone who can guide you through this journey, because वो उल्टा भी पड़ सकता है कई बार, आपका शुगर बहुत ज्यादा गिर भी सकता है अगर आप बहुत ज्यादा फास्टिंग करेंगे या हम जो भी चीज सीखेंगे। Okay, so before we dive into what are the energy, how is energy metabolized in our body, let us first understand who we are. Okay, तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में certain rhythms होते हैं। Okay, so have you heard of some rhythms? मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ कि हमारे बॉडी को कौन सा रिदम चलाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सा रिदम बोलते हैं, या हरप्रीत? You mean The the cardiac. circadian cycle? One at a time, please. Harpreet, yeah. Circadian cycle. Circadian rhythm. Okay. So what is circadian rhythm? Anybody wants to try? What is circadian rhythm? Yes, there is something called as our biological clock. हिंदी में भी बोल सकते हैं आप. You can speak in Hindi also. So with the sun we have to move. जैसे सन आता है उस वक्त खाना पीना शुरू करना है, और जब तक सन रहता है तब तक करना है। Okay. Yeah, you're partially correct. Yes. So it has something to do with sun. Okay. तो हम आज दो रिदम समझेंगे। हमारे शरीर में दो तरह के रिदम्स होते हैं। Okay. एक होता है सर्कैडियन रिदम। Can anybody type in the chat box the spelling of circadian rhythm so that सबको पता रहे? Circadian rhythm is the 24-hour cycle. Okay, ये आप समझ जाइए। सर्कैडियन रिदम जो होता है हमारे शरीर में 24 घंटे का एक साइकिल होता है। तो जैसे बलजीत जी ने बहुत राइटली बोला कि सन जो सनराइज एंड सनसेट जो होता है, ये दिन में कितनी बार होता है? ये सनराइज सनसेट एक बार होता है। ओके, जो चीजें दिन में एक बार होती है ना, उसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। ओके, आप लिख सकते हैं अपने बुक में, आपको लिखना है इट्स अ 24-hour साइकिल। ओके, अब कुछ चीजें होती हैं जो बार बार होती है हमारे शरीर में। आप बताइए कौन सी चीजें जो बार बार होती है हमारे शरीर में नेचुरली? लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल रिदम्स, नॉट द एक्सटर्नल रिदम्स नाउ। तो रिदम्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। ब्रीदिंग, यस हरप्रीत, राइट। ब्रीदिंग इज वन फॉर्म ऑफ rhythm which happens very often. What else happens? Rhythm, breathing के बाद और क्या होता है हमारे शरीर में बार बार? I want answers from you guys. It's not rocket science. Heartbeat, yes. Harpreet has all the answers. Heartbeat, और क्या होता है? काफी चीजें होती है हमारे शरीर में जो बार बार हो रही है। This is by the way known as ultradian rhythm. Let me type in the chat box. Digestive system, it's I'll just come to that. First I'll type the spelling. ओके, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में और भी रिदम्स होते हैं, बट टुडे वी विल स्टिक टू दीस टू रिदम्स। या ओके, तो एक हो गया सर्कैडियन रिदम जो 24 घंटे का साइकिल होता है, एक हो गया अल्ट्राडियन रिदम जो मल्टीपल साइकिल्स थ्रू आउट द डे।
Okay, so let's understand इसमें क्या क्या आता है. I'll just share my screen. I couldn't make a PowerPoint because of lack of time. So I'll just share. मैंने word में सिर्फ type कर लिया है. So here it is. Can you look at the screen now? Ultradian rhythms on your screen. I'll just zoom it further. So these are rhythms which happens multiple times during the day. Somebody say yes. Can you look at the screen now? The word file. Yeah, sir. Yes. So this includes what Harpreet very rightly said, blood circulation, blinking, जो हमारी eyes blink करती है, that is ultradian rhythm, pulse, जो हमारा pulse rate होता है, hormonal secretions जो होते हैं हमारे body में, okay. So there are certain times during the day, certain hormones are secreted. तो morning में जैसे cortisol secrete होता है, evening में melatonin secrete होता है, various other hormones are there, hundreds of hormones जो secrete होता है, like जो thyroid होता है, वो भी एक hormone है. Okay, so different hormonal secretions happen. Heart rate, like she said, thermoregulation, जो temperature regulate होता है हमारे शरीर में, that is also an example of ultradian rhythm. Bowel activity, that pass the motions. Nostril dilation, जो हमारा breathing होता है, it is never equal. Our breathing is not symmetrical. कभी एक नाक से ज्यादा श्वास लेते हैं, कभी दूसरे नाक से ज्यादा श्वास लेते हैं. Appetite, दिन में बार बार हमें जो भूख लगती है. Arousal, मतलब the sex pattern या जो होता है, या arousal जो बोलते हैं, that is also example of ultradian rhythm. Okay, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, we'll come to this later on. पर हमें पहले जानना जरूरी है कि हम कौन है. Okay, सबसे पहले there is an internal rhythm in our body, there is an external rhythm in nature. Okay, now external rhythm के कौन examples बताएगा, चलिए nature में कौन कौन से external rhythms होते हैं. What happens, किसने पहले बोला था, बलजी जी ने पहले बोला था. I'll give you hint. क्या होता है नेचर में. See, there are seasons, okay? Seasons that happen in nature. That is example of external rhythm. Sunrise and sunset. That is example of external rhythm, okay? So the more your internal rhythm is aligned with the external rhythm of nature, you will maintain your health. आप healthy रहेंगे, you will be healthy, you will be vital, you will be disease free. Primary reason for the imbalances in our body today, ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, खास करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन या स्ट्रेस, ऑल्सो थायराइड, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट बिकॉज our own biological rhythms is not in alignment with rhythms of nature. Okay, so let's focus on our own biological rhythms today. Okay, so Divya Bhabhi mentioned digestion. So what do you think? Is digestion an ultradian rhythm or the circadian, जो दिन में एक बार होता है या बार बार होता है, कौन बताए? What is that? Because ये एनर्जी कैसे मेटाबोलाइज होता है, उसके पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि दिन में एक बार होता है कि बार बार होता है. Who will try? There is no negative marking. अल्ट्राडियन rhythm. Ultradian. Okay. Why, Manmohan ji? Why it is ultradian? दिन में अपने को बार बार डाइजेशन होता है, खाना भी खाते हैं तो फिर डाइजेस्ट करते हैं उसको, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं. Okay, right. Manmohan ji is right. It is an example of ultradian rhythm wherein digestion happens throughout the day. Okay. Now, where does problem occur? Where does problem occur? When we force our body to digest food at the wrong time. ओके, तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, एक होता है अल्ट्राडियन रिदम, एक होता है सर्कैडियन रिदम. सर्कैडियन रिदम होता है जो 24 घंटे का एक साइकिल होता है, राइट. तो एक सनराइज होता है, जैसे बलजीत ने बहुत राइट बोला, सनराइज होता है तो सर्टन थिंग्स आर एक्टिवेटेड इन अवर बॉडी, जो हम आगे सीखेंगे क्या क्या होता है. एंड सनसेट के साथ क्या होता है, सर्टन थिंग्स शट ऑफ. ओके, तो आप कितना भी आप ट्राई कर लो, रात को सनशाइन नहीं होगा, जहां भी आप है सनशाइन नहीं होने वाला है उस समय. ओके, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट आवर ओन जो अल्ट्राडियन रिदम है टू गेट एक्टिवेटेड एट द रॉन्ग टाइम. ओके, तो व्हेन वी डू रॉन्ग थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम, डिजीजेस अकर. एंड देन वी क्वेश्चन, वी गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट वी टेल डॉक्टर, डॉक्टर आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम हैविंग दिस कॉन्स्टिपेशन, आई एम हैविंग दिस ब्लोटिंग, आई एम दिस एसिडिटी, बट आई एम ईटिंग द राइट थिंग्स, बट व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. So you are getting the hints like what is our biological rhythm, what is the rhythms of the nature, and how these two are not in alignment. That is the reason for our diseases, जो हमें बीमारियां हो रही है. तो let's, तो हम जो क्लासेस में करते हैं, what we are learning in the classes, what I am trying to do
in a very fun way, in a very interactive way, in very very small homeworks जो आपको देता हूँ. I'm trying to align your rhythms. So when I had these 4 autoimmune conditions जो मुझे खुद थे, okay, I had ankylosing spondylitis, Crohn's disease, hemolytic anemia. My rhythms were out of this thing. So what Yoga Institute did, it like helped me align my rhythms. Obviously, they didn't go deep into this medical science part and everything, but I trusted them because I was suffering. I had no other option नहीं था तो क्या करो यार, मरता क्या नहीं करता, मेरे लिए वो बात हो गई थी. And I just followed them to the T. And within 6 months to a year, the so-called incurable diseases जो medical science बोलता है cure नहीं हो सकती, I'm off medications for past 16 years now. And medical science says it's a miracle कि Crohn's cure हो गया. That's not a miracle. I just aligned myself with nature. I just changed my routines, my diet, my lifestyle, and magic happened on its own. It's not magic. There are thousands and lakhs of cases जो मेडिकल साइंस बोलता है मे बी इट इज प्लेसिबो इफेक्ट, बट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई वुड से अ प्रूफ दैट वी कैन हील अवर सेल्स. प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, सो यू कैन रिफर टू डॉक्टर लीजा रैंकिन, शी इज अ मेडिकल डॉक्टर, एंड उनके बुक है माइंड ओवर मेडिसिन. यू कैन, इफ समबडी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यू कैन रीड हर बुक. उनके यूट्यूब वीडियोज भी हैं. Just type her name in the chat box. So she's my professor at IIN. IIN is the Institute of Integrative Nutrition, which is the biggest health coaching center in the world. So she is our guest lecturer there, Dr. Lisa Rankin. You can check out her YouTube videos also. Okay, दो TED Talk हैं, which is very enlightening. Okay, so if anybody is suffering from any diseases which doctors say cannot be cured, I would say there are some modifiable factors. ठीक है, 100% cure शायद नहीं भी हो कभी, but there are certain modifiable factors that we can do. चलो हमें एक बीमारी है, डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, दवाई में वो आग लगी हुई है, वो पानी डालने का काम कर रहे हैं, बट हम आग में घी डालना तो बंद करें, जो हम गलतियां कर रहे हैं खुद. We human beings, see, we most of us here are adults, people in their 30s 40s 50s 60s. We know what is wrong for us. हमें कोई बताने के लिए नहीं चाहिए कि शुगर हमारे लिए खराब है या फ्राइड फूड हमारे लिए खराब है या लेट नाइट ईटिंग हमारे लिए खराब है. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ना, योर कन्विक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग. तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको लॉजिक बताने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 1 hour. What is happening within you? Okay, so let's focus today on the energy cycle. Okay, so एक और साइकिल होता है हमारी बॉडी में, which is known as the energy cycles in our body, which most of us have been fooled, I would say. Fool बना दिया गया है. Okay, by whom? By the food industry primarily, because for them you are business. Okay, so the more you consume, the more profits they make. Okay, so if you are trained since childhood to believe that you should eat 10 times in a day, you are not wrong, because breakfast is the most important meal of the day. किसने बोला था? Cereal making companies ने बोला. Okay, you should eat 10 times in a day to maintain your metabolism. There is no scientific literature behind it that you should, a normal person, okay, that a normal person without any diseases should eat 10 times in a day to maintain their metabolism. किसने बोला? Again, food industry ने बोला. Okay, so we are being made scapegoats कि हम दिन में 10 बार खाएंगे. जैसे मैंने कल 6 बजे डिनर कर लिया था. एम आई लुकिंग वीक? और हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मुझे देखा एक्सरसाइज करते हुए, नॉर्मली टेक एक्सरसाइज क्लासेस 7 to 8. डू आई फील वीक, एनर्जेटिक, लेस क्रिएटिव एंड दिस थिंग? एंड आई हैड सो मेनी कंडीशंस माई सेल्फ, हेल्थ कंडीशंस, एंड हाउ आई रिकवर्ड कंप्लीटली. तो पहले बात समझिए कि हमारे शरीर में एनर्जी साइकिल्स होते हैं. देर आर डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स in our body. You can write this down. It's a very important point. Different energy storage systems जो भगवान ने हमारे अंदर बना के भेजा है हमारे शरीर में. Let's go back now to our past, our ancestors. Okay, तो आज से 30 40 50 साल पहले फ्रिज नहीं होता था हमारे पास. ओके, उसके और पहले जाइए, we didn't used to store grains. उसके और पहले जाइए, there was no agriculture also. उसके और पहले जाएंगे, we were hunters and gatherers. Okay, so for millions of years we had a certain eating pattern. जब लाइट नहीं थी, आज से 200 साल पहले लाइट भी नहीं थी. Okay, so for millions of years, if you consider this human evolution on a continent, millions of years we were eating in a certain, used to fast and feast. He knew कि हम कब हट करेंगे, हमें आज खाना जाके नहीं मिलेगा, but people still serve for one. So if you go back to like
thousands of years back, people used to live for more than 150 years. 150 साल जीते थे. And they used to fast and feast because food was not stored. खाने को हम स्टोर नहीं करते थे. ओके, मिला, हंट करके खा लिया, एक सीजन्स के हिसाब से खा लेते थे, जो सीजन में होगा खा लिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर, द सो कॉल्ड, वी वर नॉट सो एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ food, the food how it is grown. This all called genetically modified foods were not there. Apples were not available throughout the year. Watermelon was available only in summer season. Mango was, अब तो चाहिए तो 12 महीना आप मैंगो खा सकते हैं, 12 महीना आप सब कुछ खा सकते हैं. दिस इज द रीजन वी आर फॉलोइंग इल. समझना पड़ेगा. सो वी वर डिजाइंड, आवर बॉडी इज डिजाइंड टू फास्ट एंड फीस्ट, फास्ट एंड फीस्ट. उसके लिए भगवान ने क्या किया, हमारे शरीर में सर्टन एनर्जी सिस्टम्स बनाए हैं, जो आज हम सीखेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्ले द फर्स्ट वीडियो नाउ. Okay, so this is by my professor David Levitsky. He's from Cornell, USA. He's the head of Department of Human Ecology there. He will first explain what happens when we don't eat for 10 hours. Okay, उसके पहले चलिए मैं एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, since many people have joined today for the first time. हम जब खाना खाते हैं, okay, that food gets converted to glucose. That is the primary energy source in our body. Okay, you can write primary energy source in our body. Now I said that we are designed to fast and feast. Okay, so when we are fasting, when we are not eating, तो ग्लूकोज के जो स्टोर्स होते हैं, they get depleted. तो सपोज मैंने कल जैसे शाम को 6 बजे खाना खाया था, रात को 3-4 बजे के आसपास उससे जो फूड से मुझे एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट गॉट डिप्लीटेड. तो आई शुड बी डेड बाय नाउ. ये मेरा तो ग्लूकोज स्टोर्स खत्म हो गया, एनर्जी स्टोर खत्म हो गया. तो हाउ एम आई टॉकिंग नाउ? Let's listen to Dr. Levitsky, what he has to say. It's a very technical thing. Don't get disheartened. I will just simplify that for everyone. So don't get like, यार ये क्या बोल रहा है डॉक्टर लिविट्स्की, मुझे तो ABCD नहीं समझा. I also don't have that kind of medical background. But yes, I will decode that for you. Let me check where is the video. Actually, I've just logged out. I have to log in again because my session was timed out. So this video will stay for only 4-5 days more. So that's why I took the classes today. Anybody has any questions, any sharing to do till in the meantime when I log into my account? Yeah, I've logged in. Actually, it was in the another video in another tab altogether. So no questions? Great. Actually, I'm not allowed to share, but chalo, for the love for my students, I'm doing this. So this is our user interface that we do. So this is about blood glucose levels. जब मैंने से बोला कि अब मेरे blood glucose मेरा down हो गया है. So what is regulating? I'm just playing the video. Somebody say yes when you listen to the sound. Okay, maybe Pooja can say yes when you listen to the sound. So we have this intricate insulin system Yeah, I and can receptor listen. system to drive the glucose down. However, we don't want to drive the glucose down too low. If we drove it all the way down, it's usually around 80 milligrams percent. If we drive it down to about 20, I guarantee you're going to be flat on your back, fainting, because neural function, brain function, would stop acting. So we want to keep that glucose up, in spite of the fact that insulin is driving it down. So we have a particular mechanism that going. मैं खाली convert कर दूंगा because I have many people who don't understand English here. So there is a certain range of blood glucose which needs to be maintained. एक certain range हमें maintain करना पड़ेगा blood glucose का. तो मैंने खाना नहीं खाया कल शाम को 6 बजे से, तो मेरा blood glucose अभी तक गिर जाना चाहिए था. सबको मालूम है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, खासकर डायबिटीज पेशेंट उनको पता होगा. 80 से लेके 110 के बीच में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए हमारा. ओके, जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज गिर जाना चाहिए. बट क्यों नहीं गिरा मेरा ब्लड ग्लूकोज, अब हम समझेंगे व्हाट इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. ओके, दैट वी आर गोइंग टू लिसन नाउ. तो मैं ऐसे वीडियोस बार बार स्टॉप करूंगा बीच में ताकि सब समझ पाए. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड ग्लूकोज फॉल्स. हाउ डज बॉडी मेंटेन इट? Going back to the pancreas, going back to the islets of Langerhans, that's where those beta cells exist. They will produce in another set of cells called the alpha cells, they will release a substance called glucagon. So these alpha cells now
You can write this in your book. There is a thing called glucagon. This is another energy source in our body. Like the beta cells are sensing the amount of glucose that's being circulated through the body. And when blood glucose starts to get low, somewhere around 60, 50 milligrams percent, they will start producing glucagon. Glucagon will circulate through the body. It will go back to the liver. And what it does in the liver is release the stash of glycogen that we stored. Remember, after we ate, we had this massive surge of glucose into the liver, and we stored much of this glucose in the liver as glycogen, the storage form of glucose. What glucagon will do, I think this much is enough for you to learn. तो सी लॉजिक देखिए अब. नाउ आई अंडर एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रिज का. ओके, सो कंसिडर रेफ्रिजरेटर जहां पर आप फूड स्टोर करते हैं. ठीक है ना. ये एआई मेरा हैंड रेस कर रहा है. ओके, मैंने रेस माय हैंड्स. ओके, सो रेफ्रिजरेटर में आपका खाना स्टोर हो गया. ओके, तो लॉजिकली क्या करेंगे आप? जो पहले से खाना स्टोर है आप वो खाएंगे कि जो नया आपने रखा वो पहले खाएंगे? व्हाट विल यू डू? व्हाट डू वी डू नॉर्मली? पुराना वाला पहले खाएंगे. पहले पुराना वाला पहले खाएंगे, राइट? व्हाट इज हैपनिंग विथ ह्यूमन बॉडी, विथ ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट वी आर डूइंग विथ आवर सेल्स? हमारे शरीर में बहुत सारा खाना पहले से स्टोर्ड है, बट हमें बचपन से सिखा दिया गया कि हर 2 घंटे में खाओ वरना आपको कमजोरी आ जाएगी. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट यूजिंग द एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी. ओके, अगर आपके फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाना 7 दिन बाद 10 दिन बाद क्या होगा? वो Spoiled. सड़ जाएगा. सड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, इट विल टर्न या या खराब हो जाएगा खाना, राइट? वही हमारे साथ हो रहा है शरीर के साथ कि हमें जो कंडीशन किया गया है कि आप दिन में 10 बार खाओ, यू आर जस्ट यूजिंग वन एनर्जी सोर्स विच इज ग्लूकोज. हम बाकी एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं. हम देखेंगे और भी काफी सारे हैं. सो व्हाट इज द सेकंड एनर्जी सोर्स? क्या सीखा आपने? व्हाट इज द सेकंड एनर्जी सोर्स? अभी मैंने बताया आपको. Glucagon. नो, एक्चुअली इट इज ग्लाइकोजेन. जो हमने से पढ़ा, ग्लाइकोजेन. यस, GLYCOGEN. दैट इज द सेकंड एंड दैट इज एक्टिवेटेड बाय ग्लूकागॉन. ओके, ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन जो रिलीज होता है कहां से? हमारे अल्फा सेल से. सो पैनक्रियाज में, डोंट वरी अबाउट दिस टर्म्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है. बट देयर इज अ सर्टेन मैकेनिज्म इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट हो जाता है 8 से 10 घंटा हम जब नहीं खाते हैं. दैट गेट्स एक्टिवेटेड through alpha cells in the pancreas. It releases a certain hormone called glucagon, which helps us utilize glycogen stores in our liver. हमारे लिवर में सर्टन ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, वो यूज हो रहे हैं. सो मे बी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे को 12 घंटे के ऊपर हो गए, 13 घंटे हो गए खाना खाए. आई एम यूटिलाइजिंग मे बी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एक्चुअली इट इज नॉट, बिकॉज 8 से 10 घंटा हमारा शरीर चलता है ग्लूकोज पे हमारे खाने के बाद. ओके, उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोर्स 2 घंटे के लिए काम करता है. तो इफ यू टेक माई एग्जाम्पल, 6 बजे मैंने खाना खाया, 3 बजे तक मेरा 9 घंटे में एवरेज ले लेता हूँ, चलो मेरा ग्लूकोज पे बॉडी चला. आफ्टर दैट 3 से 5 बजे के बीच में आई यूज माई ग्लाइकोजन स्टोर्स. जो मैं उठा, मैंने शावर लिया, मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया, आई वॉज यूजिंग माई ग्लाइकोजन, नॉट फीलिंग वीक. सो दैट्स व्हाई माई ब्लड ग्लूकोज डिडंट फेल. मेरा ब्लड ग्लूकोज गिरा नहीं. ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 to 110 के बीच में मेंटेन होगा. अगर मैं चेक करूंगा अभी, सिंस आई डोंट हैव डायबिटीज, इट विल बी मेंटेन्ड. हाउ इंटेलिजेंट इज अवर बॉडी. सी, उसको पता है कि इसको 8 से 10 घंटा खाना खाने हो गए हैं, अब मुझे ग्लाइकोजन यूज करना है. पर अब तो मेरा यार 12 घंटे हो गए, 13 घंटे हो गए, अब कैसे यूज होगा? अब मैं किस पे काम कर रहा हूँ? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट इज द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी? ग्लाइकोजन स्टोर्स. तो आपके फ्रिज का आप समझ जाइए, एग्जाम्पल जो मैंने दिया, आप थोड़ा सा जो पहले आपने स्टोर किया है, मे बी एक दिन पहले, आप वो एनर्जी यूज कर रहे हैं. ओके, दिस इज जस्ट एनालॉजी आई एम गिविंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. दिस आई हैव नॉट लर्नड एट कॉर्नेल. Next, now let's understand ki what's the next defense mechanism. Now when your glycogen stores, now I decide not to eat, मेरा खाने का मन नहीं है आज, या मेरा कोई एग्जाम है, या मेरा कोई क्लास है, या इन जनरल मुझे नहीं खाना है, just because I know that it is frequent, it is not good. What happens when my glycogen stores are depleted? Let's understand this now. So this we are learning, जो नए join किए अभी, the energy cycles in our body, and then later on we'll come to why intermittent fasting is good for us. Okay,
But this is for people who don't have any diabetes. अगर आपको diabetes है, please consider your doctor before doing any changes to your routine. Okay, so now we have a system that is operated to keep our glucose off, and what we had to do is dip into our stash of glycogen, but we can maintain blood glucose for at least a couple hours because that's the amount that we have in the liver that's going to keep the blood glucose up. But suppose you decided you didn't want to eat, you don't have time, you have an exam, you have other things to do. What happens then to this glucose? You only have a limited supply of glycogen, you run out of this defensive glucose. Well, then you got to start using your head. And in specific, you have to use a specific structure in your head that's called the hypothalamus. It's a structure, very important structure, that's buried deep inside of your brain. Your hypothalamus constantly is reading the amount of glucose that's circulating around the body. And as long as the glucagon could take care of things within the normal range, the hypothalamus is very happy. Once glucose starts to drop, though, around 50 milligrams percent, and you don't have any more glycogen to keep the glucose up, the hypothalamus is going to send out a signal to the sympathetic nervous system to say, we need some help here. The sympathetic will be activated. When the sympathetic is activated, remember, everything in the sympathetic gets activated. And one specific area that's being activated is the adrenal gland. The adrenal gland is this little gland that sits on top of the kidney. So it's another part of the body entirely. We have neurons that run from the sympathetic nervous system to the adrenal gland. The adrenal gland is made up of two parts, both of which play a very important role in maintaining blood glucose. Inside, there's a little ball called the adrenal medulla. The sympathetic will stimulate the adrenal medulla to produce a substance called epinephrine or adrenaline. And that's the same adrenaline everybody talks about when you're scared. Adrenaline is a very important component of this reaction because adrenaline then will work back to the liver where it will turn on a process called gluconeogenesis. Remember I said? Don't worry, you don't need to memorize all this or you need to know all this. This is just a technical thing. But this is important. You can write this in your book. There is another process. जो glycogen use हुआ ना, उसके बाद gluconeogenesis. This is another thing that happens in our body. अब किससे एनर्जी आएगा आप देखिए आप. This thing is important now. अभी तक जो था, don't worry. अगर आपको कुछ नहीं समझा, don't worry about that. It was very technical, very medical terms were used. Said the liver can make glucose out of amino acids. And so what epinephrine will do is cause the liver to start producing glucose from amino acids. This thing is important. Next is our amino acids. Don't link this to protein only. Okay. So these are amino acids that are produced by liver. Okay. So there are certain amino acids which are essential, which are जो हमें diet से मिलता है, and certain amino acids जो हमारे body खुद बनाते हैं. Okay. So here हम बात कर रहे हैं our next energy source, which is amino acids. Don't worry कि आपका प्रोटीन कम हो जाएगा, आप अपना मसल यूज कर रहे हैं, वो हम will come that to later on, वो तो और बाद में आता है. Okay. See, तो ग्लूकोज कितने घंटा चलता है मैंने क्या बताया? How long does glucose last? Yeah, yes, 7 to 8 hours. Okay. अब नेक्स्ट ग्लाइकोजन कितनी देर चलेगा? 2 घंटे. 2 घंटे ग्लाइकोजन चला. नाउ आई एम नॉट स्टिल नॉट ईटन. ओके. तो क्या करता है ब्रेन कम्स टू, जो हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस जो बोला उन्होंने, एक ब्रेन में एक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोथैलेमस दैट गेट्स एक्टिवेटेड. बॉडी सेंड्स अ सिग्नल, अरे मनीष इज नॉट ईटिंग, लेट्स डू समथिंग, वी कैन नॉट लेट हिम डाई. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स को उसमें गया, वहां पर एक हार्मोन रिलीज हुआ विच इज कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, एंड वो सिग्नल भेजता है लिवर को, अरे मनीष इज नॉट ईटिंग, डू समथिंग. तो उसने बोला डोंट वरी, लिवर बोलता है डोंट वरी, आई हैव अमाइनो एसिड्स, द नेक्स्ट एनर्जी सोर्स, एंड इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज, द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोजियोनेसिस. जो मैंने आपको बोला ना, डोंट वरी, अगर आपको ये भी याद नहीं होता है ना, बट इतना समझ जाइए,
पहले शरीर ने ग्लूकोज यूज किया, सेकेंड बॉडी ने ग्लाइकोजन यूज किया, अब थर्ड बॉडी यूज कर रहा है अमाइनो एसिड्स। सी, बट जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, जब आपने नहीं खाया, कई बार हमें थोड़ी सी कमजोरी लगने लगती है, हमें लगता है कि यार हम कमजोर हो गए हैं। बिकॉज जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आपका, that time you will feel slight palpitations, because it's a general function of the sympathetic nervous system. It's the fight or flight response of the body. उस समय आपको थोड़ी कमजोरी लगेगी, अरे यार मुझे क्या हो गया, आपको डर लगेगा, अरे यार मनीष ने इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला है, कहीं मैं कमजोर तो नहीं पड़ रही हूँ, अरे यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़े में भी पसीने आएंगे, थोड़े चक्कर आएंगे। नॉट टू वरी एट ऑल। इफ यू डोंट हैव डायबिटीज, नॉट टू वरी एट ऑल। इफ यू हैव डायबिटीज, यू शुड चेक योर ब्लड ग्लूकोज, कहीं वो बहुत ज्यादा गिर तो नहीं गया, बिकॉज यू मे बी ऑन इंसुलिन, यू मे बी ऑन अदर मेडिकेशंस फॉर रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज अननेचुरली। बट जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। It's just your sympathetic reaction that is happening in your body, that you feel that nervousness, that slight hunger pangs जो हमें महसूस होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा अनईजी लगता है आपको, that is just a reaction of your hypothalamus जो sympathetic activate किया। adrenal glands काम पे आ जाएंगे, it will release that hormone जो amino acids को convert कर देगा into glucose. So you're good to go for another 2-3 hours with amino acids also. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स? मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया आपको। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी राइट नाउ। एंड स्टिल देयर आर मेनी एनर्जी सोर्सेस। सी, भगवान ने कितना इंटेलिजेंट बनाया हमारे बॉडी को। सो आई स्ट्रेट अवे जंप टू द नेक्स्ट थिंग। आगे हमें समझना इतना जरूरी नहीं है इसका। Okay. I have a query, Manish. Yeah. So like from glucose, when we are having glucose, suppose let's say we are taking dinner in the night, okay, it runs for 8-10 hours, okay. Yeah. So when we are sleeping, at that point of time, maybe we are not using our energy. Yes. Right. Yes. So in Yes. that time, like, are we going to get the energy for more number of times, or it is getting stored somewhere? No, see what happens now. I'll come to that later on. It's a very good question. That when we are sleeping, उस समय तो you mean to ask that energy is not used, right? But Yeah, we are not using our energy. but Like, it is we are used, using, but because very there are minimal energy we are using. that's why we say that eating late night is not logical, not required, because actually you don't need glucose at that time that much. So that's why I say, Vishal, that we should have our dinner by 6:37, maximum 8, because when you sleep, actually that time energy is not required. Okay, so that's why we say we eat a very light meal, because you have ample. अब देखिए विशाल, देखेंगे ना आगे और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं. We'll come to that later on, that why we should have dinner on time. It's because before sunset is not early, it's on time. Those who are eating after sunset or maybe late in the midnight, you are eating late. Okay, so we need to change our vocabulary, or what is on time, what is early, and what is late. Okay, because we have been trained, Vishal, that we should eat. That's the biggest problem. So now see what happens when amino acids get depleted. Now, that's all well and good as long as we have amino acids in the liver to produce the glucose. But we only have a limited amount of amino acids that are floating around in the liver at any given time. And once we run out of the amino acids, we can't continue to promote gluconeogenesis or make more glucose from these amino acids. That's when the body has a third layer of protection against the hypoglycemia. Here again, it's the hypothalamus that is sensing the fact that none of these mechanisms work, that glucose is still being dropped to lower levels. And what what the hypothalamus does is stimulate a structure right under the hypothalamus called the pituitary. And it stimulates it to release a particular hormone that's called adrenal corticotrophic hormone, or ACTH. ACTH will float in the bloodstream, come back to the adrenal gland, but instead of activating the adrenal medulla, which was activated by the sympathetic, it's going to activate the adrenal cortex, or that layer of cells around the medulla, the outside of the adrenal gland. And it's going to stimulate the release of a slew of substances called glucocorticoids. These are the same kind of corticoids that your physician may inject it into you for various kinds of joint injuries or ailments.
What the glucocorticoids do, they do a lot of things, very powerful substances. But what will they do is activate the breakdown of protein all over the body. So all your muscles then will start breaking down the protein that's in muscles to amino acids, send those amino acids back to the liver, where the liver can continue this process of gluconeogenesis. Now you might think, this is terrible, I'm going to break down all my muscles. But it's not. We have far more muscle tissue than we need for most 99% of our activities. So losing a little of the protein does not damage us, does not impair function in any way whatsoever. It acts as a supply house for these extra amino acids, the breakdown of protein, that will continually fuel the liver to continue to produce glucose. And we can actually live without eating. We can live producing the energy from our body for about a month for most adults, living off our own protein stores. And as long as these mechanisms operate, we can continue to go without eating. So did anybody understand what he said? We can live up to a month on our own protein stores. God has made, see, our body very intelligent. God knew that we will not get food. या जिनको खाना नहीं मिलता है वो सीधा मरेंगे. जो जैनी लोग जो इतना फास्टिंग करते हैं, they do fasting for 40 days and they are still alive and thriving and without any diseases. So it's not a coincidence that these things happen. So इसमें क्या बताया गया था? So in the hypothalamus in the brain there is a structure called as pituitary gland which activates again the adrenal glands का एक part है जिसको activate करता है, and that releases certain hormones which goes to your muscles, which goes to your cells, which goes to your tissues, and it start breaking down all the proteins. ओके सो जो कोई जिम के ट्रेनर जो होते हैं जो इतने एडवांस नहीं है वो बोलेंगे यार खाओ 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 वरना आपका मसल लॉस होगा. दे आर पार्शियली करेक्ट, यस. इट्स नॉट, बट बिकॉज वी हैव सो मच स्टोर्स, वो ये बात नहीं समझ रहे. See, if you want to become a bodybuilder, if you want to have that huge Tara Singh kind of body, then this is not for you. Okay, this is for a common man who wants to like live peacefully, live healthy. Okay, if you want to become that bodybuilder, obviously this diet is not for you. This is for a common man who wants to live a normal life without medicines, who want to live 120 125 years. Ye uska hai. Okay, so people who live for above 100 years in the blue zones, there are 5 blue zones in the world, they eat very limited. Okay, so then you start using the stores जो हमारे muscles and tissues में हैं. And there is a certain process. आगे और भी बहुत लंबा वीडियो है, मैं उतना लंबा बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ. There is certain thing that happens in your body which is known as ketosis. Okay, it's KETOSIS. Here your body is next using fat. Fat stores as energy. Okay, तो हमारे जो cells होते हैं, there is a certain cells called as adipose cells. This is again very technical, I'm going. Please don't get worried अगर आपको ये सब नहीं समझ रहा हो. Okay, adipose. These are the fat cells in our body. So what happens is when you don't eat, body starts using fat as energy. जो बोलते हैं ना ketogenic diet, many of you have heard. There's sort of wherein you limit the amount of carbs that you eat, and you are mostly the energy source is fat. You don't need to go on a ketogenic diet. Don't worry at all. But my only suggestion to you today is, or my question to you is, that do we need to eat frequently to live? What do you think after listening to this video by not my students? My students obviously they are like conditioned to like follow this kind of thing. Others who have joined today for the first time, maybe Bani, maybe Savneet or Madhur or Dimple, because see, this is our imbalances in our body happens just because our own biological rhythms, our own ultradian rhythms, which are there, digestion, blood circulation, heartbeat, these are not in alignment with the circadian rhythm of our own body also, and the rhythms of the external rhythms of the nature. इसकी वजह से आजकल 25-30 साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, this because we have grown in size. See, आप देखेंगे ना, most of us are overweight. तो क्या होता है, the adipose cells, जो fat cells होते हैं, उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई है because we are not using them as a source of energy.
उसको मौका ही नहीं दे रहे। हम सुबह उठते बोलते हैं 4 बादाम खा लो, 4 अखरोट खा लो, फिर 2 घंटे बाद ये जूस पी लो, इट्स अ हेल्दी जूस, नो डाउट इट इज हेल्दी, बट माय क्वेश्चन टू यू इज इट रिक्वायर्ड? I know, yeah, almonds are very healthy. It contains a lot of B vitamins. It contains a lot of protein and everything. It is there. Fiber is there. सब कुछ है. Is it required? Your body has enough. Your body is telling, cells are telling enough, boss. I don't need more. But हम सोचते नहीं यार, हमें न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है दिन में 10 बार खाओ वरना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा. Doesn't happen that way. Doesn't work that way. We are not designed to eat. Our body is very intelligent. It has multiple energy stores जो हमने आज सीखे हैं, जिसको उन्होंने ये चीज जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, वेस्ट ने क्या थप्पा लगा दिया, इसको नाम दे दिया टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड पीपल आर मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट. तो जब हम ये लॉजिक समझेंगे ना, तो अभी मेरा करेंटली मे बी माई फैट स्टोर्स आर बीइंग यूज्ड बिकॉज अब मुझे 13-14 घंटे हो गए खाना खाए, तो आई एम गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ कीटोसिस विच इज द बेस्ट फ्यूल सोर्स. कीटोन्स दो जगह ज्यादा स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में. एक तो सेल्स में होते हैं, अगर मोटापा बहुत ज्यादा है तो आपके सेल्स में होंगे. अगर if the fat percentage comes down, it is stored in your liver and in your brain. our brain is 60% fat. तो जो लोग बोलते हैं ना फैट नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए, it's a big myth. You need a good combination of carbohydrates, proteins and fats. in fact प्रोटीन सबसे कम रिक्वायर्ड है हमें. जो बहुत ज्यादा जिम के ट्रेनर जो आजकल मेडिकल डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो ज्यादा रिसर्च करके आ रहे हैं, दे स्टडी जीरो अबाउट दिस थिंग जो हम पढ़ रहे हैं. Proteins are required in very small quantities for thriving, I would say, not surviving, for thriving. So if anybody here is taking those protein powders, it is all crap. It will spoil your liver and kidneys. So we are not, God didn't meant us to eat powders or capsules. Food is food, supplement is supplement. Supplement is required when you are deficient. इवन विटामिन डी सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. अगर विटामिन डी आपका 40 से 50 के बीच में है, इवन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. B12 supplement is required only when you're deficient in B12. If you're getting your adequate B12 from diet, it is not required. Protein supplements for a common man not required at all unless you have a condition where your body is not producing those amino acids. Rest you get all the amino acids from food. If you have a good mix of carbohydrates, proteins and fats, it is more than enough. So don't fall into this trap of these food marketing companies and start wasting your preciously hard-earned money into all those unnecessary supplements and the multivitamins and the calcium and this thing की 40 के हो गए तो कैल्शियम ले लो भाई, क्या जाता है, नुकसान तो नहीं करेगा. अरे बहुत नुकसान करता है अंदर जाके. Even calcium supplement when taken incorrectly can harden the arteries of your हार्ट. आपके जो हार्ट में आर्टरीज है उसको भी हार्डन कर सकता है. प्लीज डोंट प्ले विथ योर लाइफ टेकिंग medications, taking supplements without any prescription. Doctors know much more than us. Our health coaches जो हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको 5% भी दिखाई नहीं. How much deep we go. So when I give any suggestion in the class, now be very rest assured it is highly researched, and most of the things I try it on myself first before prescribing it to anyone else. And these are all universal principles we talk about. So why it is important to, like what Vishal asked, that हमें खाते वक्त तो एनर्जी नहीं चाहिए, वेरी लॉजिकल. तो स्टॉप ईटिंग एट नाइट ना. Who tells you to eat at 11 and 12 at midnight? Actually it's not required. You have enough energy sources in your body. तो आज के सेशन का पर्पस यही था कि हमें क्यों बार बार नहीं खाना चाहिए. Ideally, if you ask me now, the best time to eat, what is that? Now go back to the natural cycle. Go back, look at the animals. Okay, do you see any animal, any dog, any bird, or any creature in the nature, any eating at night? किसी को देखा है किसी ने खाते हुए? कोई बर्ड रात को खा रहा है, या रात को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर दिखी थी, तो अमरीश पुरी बर्ड्स को कब खिलाने आता है? सुबह खिलाने आता है, रात को खिलाने जाता है, मॉर्निंग में जाता है कि आओ 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 जो डायलॉग मारते हैं. आई एम अ बिट फिल्मी, तो प्लीज, मेरे स्टूडेंट्स तो यूज्ड टू हो गए ये सब डायलॉग्स के. ओके, सो जस्ट बिहेव लाइक एनिमल्स डू, मैं तो बोलता हूँ. Just put your intelligence aside and let nature's intelligence work. So your body is very intelligent, your nature is very intelligent. तो जानवर कब खाते हैं? सुबह उठते पहले वो मेहनत करते हैं. ओके, तो चिड़िया पहले मेहनत करेगी, पहले ढूंढेगी. ओके, सुबह उठते ही खाने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बताया,
काफी सारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स है, मसल्स है, कीटोन्स है, फैट्स है। 30 दिन तक डॉक्टर लेविट्स के बोलते नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, प्लीज डोंट डू दैट एक्सट्रीम, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। बट इट्स जस्ट ही एक्सप्लेन्ड कि इतना एनर्जी स्टोर है हमारे बॉडी में। तो चिंता मत करिए, 12 से 14 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू योर चाइल्ड और यू और एनीथिंग। हाँ, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर प्रेग्नेंट और हु आर लैक्टेटिंग और हु आर सिवियरली अंडरवेट और मैल नरिश्ड, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। उनके लिए में भी 10 से 12 घंटा काफी है। Rest for a normal individual, if you have one cross 14 to 15 years of age, this pattern of eating is very safe. It's very safe for people who don't have diabetes or any kind of other diseases, जिसमें जैसे कोई कीमोथेरेपी ले रहा है तो उनको में भी खाना पड़ता है बार बार to maintain the energy. So this recommendation is for a normal individual who doesn't have any major lifestyle condition. अगर किसी को inflammatory problems है, now let's come to inflammation. Autoimmune conditions, inflammatory conditions, arthritis, lupus, these kind of like diseases which are related to inflammation, this diet is highly recommended. This pattern of eating rather is highly recommended. Okay, so here is one book I would recommend अगर किसी को interest है. This is one of my guest professors at IIN, Dr. Will Cole. Okay, so he is amongst the top 50 functional medicine experts in the US. उनकी फीस एक सेशन की 4.5 लाख है। इफ यू वांट टू कंसल्ट हिम, इंडियन रुपीस में 4.5 लाख वो चार्ज करते हैं फॉर वन सेशन, जस्ट टू गिव यू एडवाइस। एंड जो उनकी बुक से मैं फ्री में सीख रहा हूँ, मैंने खाली बुक 1000 रुपए की बुक है ये, तो उनका फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट इंट्यूटिव फास्टिंग में अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस डाइट। सो आई एम गोइंग टू रीड आउट फॉर यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डाइट। उन्होंने काफी लॉजिकली समझाया जो मैंने आपको समझाया ना, दैट व्हाई वी आर नॉट मेंट टू ईट सो मेनी टाइम्स इन अ डे, व्हाट हैपेंस, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज, और ये सब जो उन्होंने बताया था। This thing is very important now because few of you I know are suffering from some of these diseases, that today fasting is studied as a potential treatment for almost endless list of diseases, including diabetes, asthma, chronic pain, metabolic syndrome matlab diabetes, hypertension, blood pressure, obesity, including autoimmune diseases like lupus, multiple sclerosis, heart disease, and cancer. This is all research which he has written in his book, and he has multiple references, multiple clinical trials, that how this pattern of eating is helping people with lupus, multiple sclerosis, cancers. So when I went to Sharon, when my mother was diagnosed with breast cancer, first thing they put her on was intermittent fasting. उन्होंने बोला 12 के पहले आप कुछ मत खाओ, अगर आप रात को 8 बजे खाते हो ना, नेक्स्ट डे 12 के। वी वर कंसर्न, यार कैंसर है, कैसे नहीं खाएंगे, शी हैज टू ईट ईट ईट, एनर्जी कहाँ से आएगा। एंड व्हेन शी स्टार्टेड, उन्होंने 12 बजे तक तो नहीं किया, बट व्हेन शी फॉलोड दिस पैटर्न ऑफ ईटिंग, व्हेन शी इज फास्टिंग फॉर 12 to 14 hours in a day, we saw her aging is reversing now. The doctor told that yaar, she will get worse, and she is getting better now. It's been 2 years now, almost 2 years, cancer hasn't relapsed. She has triple negative breast cancer. I had so many autoimmune conditions. Yoga Institute told me that time I didn't had this much medical knowledge and this inclination also to learn. They told me fast once a week, be on a fruit diet once a week, don't eat after sunset, get up, do your exercises, do your morning routine, and then only eat. So subconsciously they put me into a form of intermittent fasting, where I used to have my dinner by 7, nothing, have nothing before 10 next day, and I was fasting for 15 hours, and no wonders my inflammation came down. So if you're having any form of lupus here, or arthritis, or multiple sclerosis, or heart disease, cancer, high cholesterol, diabetes, hypertension, bring down your weight, 90% of problems will be solved. And if you are overweight, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, ये मत समझिए, body are giving signals. Constipation is a disease. Not able to sleep is a disease. Anxiety is a disease. Body ache is a signal. These are all wake up calls. अगर आपको wake up call आना चालू हो गया है, डोंट वेट फॉर दैट बॉम्ब ब्लास्ट, कि जिस दिन डॉक्टर बोलेगा आपको हार्ट डिजीज हो गया, या आपको डायबिटीज हो गया, या आपको कैंसर हो गया। डोंट वेट फॉर दैट पॉइंट। When these guys, Will Cole, he's not a medical doctor, he's a functional medicine practitioner. People who are charging a bomb for their consultation, they are like providing free services also. उनके वीडियोस जाके देखिए, there are multiple doctors who, Dr. Pradeep Jamna Das, Dr. Rangan Chatterjee, these are medical doctors. They are like, why this pattern of eating is meant for us. हमारे साइकिल सब बराबर हो जाएंगे। जो फीमेल्स में देयर इज अनदर साइकिल कॉल्ड इंफ्राइडियन साइकिल होता है, जो वुमेन में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
which happens once in 28 days maybe. There are so many women who come to me that their periods are not on time or it's very painful. When I tell them go on this diet, बोले इससे क्या होगा? मैं बोला पहले करो तो सही, अब क्या होगा? They want quick fix solutions कि एक दवाई बताओ या एक सप्लीमेंट बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊं. There is no magic pill that can cure you. You have to take things. Your body is your business. You need to learn the fundamentals of living first. So I can see the difference in people. जो लोग जल्दी खा रहे हैं, they are losing weight. या people, Vishal, who has reversed his hypertension. He was told by doctors that he has to be on medications for the rest of the life. People, cholesterol, my wife, she had high cholesterol 12 years ago. डॉक्टर ने बोला statins लेना है. सोचो 12 साल में कितने statins खाती हुई. And she's off medications and cholesterol is still normal. So don't fall into this trap कि chronic diseases, the lifestyle diseases that we have, or diseases which happens because of certain stress responses in our body. They can be solved by medicines alone. The methotrexate and all the anti-inflammatories of the world that we take, the steroids that we take, these are for temporarily dousing down inflammation. But एक तरफ inflammation कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम गलत lifestyle कर रहे हैं. We ought to eat all the crap in the world which is not meant to be eaten by us. क्या लगता है भगवान हमें क्या ये बिस्किट्स खाने के लिए पैदा किया होगा कि एक फैक्ट्री में एक बिस्किट बन के आए विच इज नथिंग बस मैदा, शेलन, मैदा, तेल और शक्कर, वो खा के आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो? कोई भी पार्ले जी खा के बच्चा जीनियस नहीं बना आज तक. ओके, आप किसी बच्चे को नेचुरली पूछिए कि स्कूल जाने के पहले बेटा तुम्हें भूख लगी है, नहीं लगी है, पर हम क्या बोलते हैं, दूध बिस्किट खा के जा बेटा. अरे दूध बिस्किट क्या कर रहा है, उसको खराब कर रहा है उसके बॉडी को. एक्चुअली योर चाइल्ड डजंट नीड फूड इन द मॉर्निंग. You are just increasing inflammation in his body by giving him all the processed food. जो हम चिप्स दे रहे हैं, जो हम ये nachos दे रहे हैं, फ्राइड फूड दे रहे हैं टिफिन में, this white bread that we are giving our kids. चलो सैंडविच खा लिया, कुछ तो खाया मेरा पोता, मेरा बेटा कुछ तो खा के जा रहा है स्कूल. I know you are concerned for your child, but your child actually doesn't need food at that time. काफी सारे energy stores है उनमें. Don't spoil your kid's health by giving him junk in the morning. कुछ देना ही हो तो नेचुरल फ्रूट आप खिला दो उनको. That will and then give healthy food in the tiffin. And for people who are grown up adults, I don't need to tell you how important it is to follow. We know that so many diseases can be reversed. There are endless benefits. Endless. The book read up from the book. Think about it. Before there were refrigerators, before there were packaged foods, and the drive-through, जो McDonald's का drive-through है, people naturally went long periods of time without food, and this is encoded into our DNA. ये हमारे DNA में already fit है that your body can live without food. Our genetics haven't changed. बोलते हैं ना ये 100-200 साल में कोई genetics change नहीं हुआ है हमारा ये. It takes thousands of years. So we have been encoded to fast and fish. There are multiple references. I can just read out from the book if you want to. Yeah. The truth is that eating all the time, even if it's a small amount, costs us a lot. Digestion requires a lot of energy, and it interferes with other important bodily processes. So what do you think now logically? भगवान ने sleep और जो restoration होता है, क्या होता है sleep में जब हम सोते हैं रात को? What happens? What happens to our cells when we sleep? They get healed. It's a repair mechanism. Yes, very right, Harpreet. Sleep is a repair mechanism. For repair, you need energy. Now, suppose if you eat at 10 in the night, you eat a full meal, roti, sabji, dal, chawal, non-veg, जो भी आप खाते रात को खाया. Digestion requires a lot of energy. It interferes with your healing. And then you question that why did I fall ill? So if anybody has any autoimmune condition here, any health condition, don't eat after 8. What you can have is water, have some green tea, have some herbal tea, that's fine. Nothing else. No calories. Your digestion is not meant to function 24/7. There are certain उसकी भी कैपेसिटी काम करने की. आपका एक ऑफिस में एम्प्लॉय है, उसको 24 घंटा आप काम कराओगे, कैसा काम करेगा वो? It is not meant to function 24/7. तो when जो rhythms of the nature, जो आपका rhythm है digestion का, it shuts off with sunset. Because there is a rhythm. आपके cells, आपके tissues में एक rhythm है, और जो हमारा gut lining है, जो हमारा gut microbiome है, there is another पूरी colony आपके gut में. There is another colony in your gut.
विच नोस कब खाना एब्जॉर्ब करना है, कब न्यूट्रिशन लेना है, कब उसको रेस्ट चाहिए फॉर डाइजेशन, फॉर असिमिलेशन, फॉर एक्यूमुलेशन, फॉर एक्रीशन. सो मॉर्निंग टाइम होता है एक्सक्रीशन के लिए, पर उठते हम क्या करते हैं, 4 से 12, सुबह 4 से 12 बजे का समय होता है पेट खाली करने के लिए. और उस समय क्या करते हैं, उठते हम खाना चालू कर देते हैं. तो आपका आपका गट माइक्रोबायोम क्या बोल रहा है, अरे भैया अभी खाना मत दो, पहले मुझे खाली तो करने दो कल का जो लेफ्ट ओवर फूड है, द फूड दैट इज स्टोर्ड इन योर स्मॉल इंटेस्टिन, इन योर स्टमक, इन योर लार्ज इंटेस्टिन, उसको पहले खाली तो होने दो. फिर खाली हो गया फिर हम खाएंगे. Food stays in your stomach for 2-3 hours. Then it goes. And can we read intuitive fasting? Yes, definitely. I recommend it strongly. It's a very easy to read book. It's a very easy to read book. And do read for your own conviction, मैं तो बोलता हूँ. Although I'm covering that in my classes, I'm covering it in a very simple language for people who don't like to read or don't know how to read. But for people, for knowledge, definitely I recommend this book if you want to read this book. It's written in very language we can easy. It is by Dr. Will Cole, Willcole. You should read. Yeah. तो एक और बात क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वेट लॉस जो बोलते हैं ना, वेट लॉस, इट इज नॉट ओनली अबाउट कैलोरीज इन कैलोरीज आउट. When the reality is that weight loss is much more complicated than a simple equation. Your body is not a calorie calculator. It's a chemistry lab. Wherein intermittent fasting resets the beautiful biochemistry lab, which is known as metabolism. Okay, so it will reset your metabolism. Metabolism क्या होता है, जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. It will reset it. जो हमारे सेल्स होते हैं, there is certain things activated which is known as autophagy, जो एक्टिवेट होता है आफ्टर 14 to 16 hours, जो आप 14 घंटा रोज नहीं खाते हैं ना, तो योर सेल्स, it's like a recycle mechanism. Your cells are getting recycled. Our bodies में 300 billion new cells are recycled every day. 300 billion cells are getting recycled every day. 75 trillion cells हमारे बॉडी में होते हैं approximately. Somebody says it's 40, somebody says 75, forget it. So there are trillions of cells in our body and billions of cells are getting recycled. But वो recycling process कब होगा? When you don't eat. If you're constantly eating, the old is not getting recycled. ऑटोफेजी को आप मौका ही नहीं दे रहे हो. क्यों एकादशी फास्टिंग बनाया? कोई बेवकूफ नहीं थे हमारे एंसेस्टर जो बोलते थे महीना में 2 बार आप खाली पानी पे रहो. दैट टाइम वी डू एक्सटेंडेड फास्टिंग ऑफ 36 to 48 आवर्स मे बी. हम जो खाली पानी पे रहते थे वो बेवकूफ नहीं थे हमारे ऋषि मुनि जो थे, या जो हमारे जिन्होंने एकादशी फास्टिंग बनाया. See, all these things, all the puzzles will fall into place when you think critically. We are not influenced by nutritionists. Don't get influenced by me also. Do your own research, use your own logic. We are all adults. It's our duty to know what is the right pattern of eating, what is the right time of eating. So when the sun is at top, that time our digestive fire जो होता है, जो जठर अग्नि बोलते हैं, that is the strongest. So that is the time to eat cooked food, maybe eat a lot of proteins, a lot of fats. उस समय आप heavy meal खा सकते हैं. That time you can eat a good meal. So what I do normally, my breakfast is between 9 and 10. I take a green smoothie. I take something cooked also if I feel very hungry. But I start my day with a very healthy green smoothie. It's a very potent anti-inflammatory green smoothie. Again, people with autoimmune conditions, with inflammatory disorders, please have a green smoothie every day. It's a good mix of soluble and insoluble fiber, and it contains a lot of nutrition. कि 12-14 घंटा आपका बॉडी कुछ नहीं खाए ना, give it an atom bomb. It's like a nuclear bomb for your body. You will feel energized. A lot of repair will happen with that. Have a good sprout salad for your breakfast. Very healthy. It's very healthy. अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं उसको आप बॉईल करके खाइए, स्टीम करके खाइए. These are all live foods we are eating. Live, जिंदा खाना है. Don't eat dead foods. Don't start your day with chai biscuit. It's a dead food. Don't start your day with that Kellogg cereal जो 6 महीने पहले किसी फैक्ट्री में बन के आया है. कि some cereal खा रहे हैं, टीवी एड में देखा है कि इसमें B12 होता है. This is all foolish. You are being made fools. Eat real food. Don't eat products. जो चीज पैकेट में आती है, these are all products. Don't start your day with products. Start your day with real food. Real food क्या होता है? That's come from nature. Natural food से अपना दिन का शुरुआत करिए. Have your proper cooked meal खाइए. Cooked meal के साथ have a good bowl of salad. Salad में again add a lot of anti-inflammatories. Make it a colorful salad. Simple logic है. Add different colors to your salad. So tomatoes, cucumbers, onion, red cabbage, beetroots, जितना this bell peppers, different colors. Make a rainbow salad.
So you don't need to worry about कौन सा phytonutrient चाहिए, कौन सा flavonoid चाहिए. You don't need to worry at all. Simple logic. Make your salad colorful. Add a little broccoli, थोड़ा green add करिए, थोड़ा greens add करिए, leafy greens add करिए. Have a proper cooked meal. अच्छा जो आपको मनपसंद है खाइए. You should be full for 5, 6, 5, 6 बजे तक full हो गए यहाँ. Then between 6 and 7 have your dinner. Straight away have your dinner. Skip this habit of snacking. This is the ideal routine I'm saying. This is not a prescription कि आपको follow करना ही है ये. What is the best for human beings मैं आपको वो बता रहा हूँ. तो see you are working as per the rhythms of the nature. कि सन के साथ आप पहले उठे, आपने पहले अपना स्टडी किया, वर्क किया, काम किया, स्कूल गए, जो भी आप करते हो. 9-10 बजे एक बार खा लिया, 1 बजे फिर खा लिया, 6-7 बजे फिर खा लिया. A normal person will not feel hungry at that time. किसको भूख लगेगी? जिसको 10 बार खाने की आदत है. तो उसके लिए straight away don't jump to this 14 or 16 hour thing. Start with a 12 hour thing. But do as per the rhythms of the nature. Do as per rhythms of nature. Nature के हिसाब से करिए आप. Okay. कि सनसेट के साथ खाना कम कर दीजिए, सनराइज के बाद ही आप खाना चालू करिए. तब ये काम करेगा. आप ये मत सोचिए कि मनीष ने इंटरमिटेंट फास्टिंग बोला है तो मैं रात को 11 बजे खा लूंगा, नेक्स्ट डे दिन में 2 बजे खाऊंगा तो मेरा तो 16 घंटा हो गया, 15 घंटा हो गया. Use your logic. Digestion is not working at 11 in the night. Your digestive system is shut off. It will lead to diseases if you eat in the night. So true. Use your logic. It's all logical. Health is logical, I would say. Nothing else. When you start using a logic, when you respect the nature के respect करिए आप. Nature knows how to heal. Your body is a self-healing mechanism. But when will it heal itself? I know many cases. मेरे पास एक lupus का case परसों आया. I went deep into research. I asked my professors. They told it can be healed completely. You don't need to be on medication for the rest of your life. Although medical science say that heal नहीं हो सकता. See, there is no cure for it. Don't get me wrong. But we can put that into remission. जैसे मेरी diseases है, it went into remission. Crohn's मुझे 17 साल से परेशान नहीं किया. AS मुझे 16 साल से परेशान नहीं किया. Okay, so you can go into complete remission provided you change your diet and lifestyle. This is like real medicine. जो आप गोलियां खाते हैं वो केमिकल है. वो आपकी हीलिंग होगी, नेचुरली आपकी हीलिंग होगी. तो आज का पर्पस मेरा यही था कि आप समझ जाइए इतने एनर्जी स्टोर्स है. डोंट गेट वरीड. अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चक्कर आता है, इट्स सिंपैथेटिक दैट इज गेटिंग एक्टिवेटेड. एंड है तो थोड़ा ग्रीन टी ले लीजिए. मे बी स्टार्ट के लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग फेज. फॉर अ स्टार्टर्स नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर अ स्टार्टर्स यस. Start with you can have nariyal pani, nimbu pani during your fasting phase. Somebody say that have that MCT oil and the black coffee and the that thing is also fine because it has been researched. So you can have black coffee during the, but I don't prefer a lot of caffeine during this, although green tea contains caffeine. But I don't prefer a strong dose of caffeine because I am like motivated enough that I don't need that switching on mechanism. I already switched. मेरा battery already charged up होता है when I get up through pranayam, through yogic practices. I charge myself. I do certain gel neti and other practices which like activates my all the cells in the body. So I don't need that external activation. सीखिए ये सब. मैं बोलता हूँ ना, these yogic practices, not because I'm a yoga teacher, that's why I'm saying this. Learn certain practices. तो sympathetic opposite होता है parasympathetic nervous system. Learn how to relax throughout the day. तो एक अल्ट्राडियन रिदम में ये भी होता है जो हम बोलते हैं ना, हर 2 घंटे में अपनी आंखें बंद करिए. Because our productivity also works in cycles. You cannot be productive throughout the day. So take frequent breaks, walk throughout the day. It is good for your body. आपके बॉडी को मैं रिदम में ला रहा हूँ. जो मैं कर रहा हूँ, ये सब छोटे छोटे चेंजेस आपके बॉडी अपने आप रिदम में आ जाएंगे. और रिदम में आ गए जब आप उल्टा सीधा खाना बंद कर दिए, जब आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालना बंद कर देंगे, बिकॉज दैट मैदा, दैट शक्कर, दैट जलेबी, दैट रसगुल्ला, दैट गुलाब जामुन, समझ जाइएगा मेरे पास कोई स्टूडेंट आया है जो ये सब खा रहा है. ओके, तो मैं मेरे फूड आइटम्स चेंज करते रहता हूँ. कोई स्टूडेंट आ गया ना, ज्यादा पापड़ भुजिया खाता है, तो मैं वो बोल के डराता हूँ. डरा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली इट्स द ट्रुथ. दैट गुलाब जामुन, दैट इज फ्राइड, दैट इज शक्कर, एंड कैंसर सेल्स लव शुगर. कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में है. आप उसको और फीड कर रहे हैं. इफ यू आर गिविंग शुगर टू योर बॉडी, यू आर फीडिंग योर कैंसर सेल्स. आप उसको बोलते हैं एक्टिवेट हो जाओ भैया. बाद में जब आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा या कोई कैंसर होगा, अरे मुझे क्यों हो गया यार, अरे शक्कर खाओगे तो कैंसर आएगा आपको. शक्कर खाना छोड़ो. तलावा खाओगे, व्हेन ऑयल इज हीटेड इट टर्न्स कार्सिनोजेनिक, जो हमने सीखा था. तो क्यों गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, मैंने समझा कि यार अगर हम खा रहे हैं तो मेरा माय चांसेस ऑफ गेटिंग नॉट ओनली डायबिटीज बट कैंसर विल इंक्रीज. तो मुझे वो गुलाब जामुन दिखता है तो मुझे कैंसर नजर आता है. दिस इज कैंसर आई एम ईटिंग. अगर वो जलेबी नजर आती है मुझे कैंसर नजर आता है कि उसमें इतना शक्कर है, इतना चाशनी है. सी आई एम टीचिंग यू माय थॉट प्रोसेस दैट हाउ डू आई गेट कंट्रोल.
When I see that sprout, I see that live food. It has so much of protein, it has so much of vitamins, it is like full of energy. वो grow कर रहा है वो. तो मैगी से कोई grow नहीं करेगा. आप मैगी खाओगे आप, या you eat a lot of like junk food, that is like empty calories we are eating. This is the main reason for all the diseases जो हो रहे हैं. Obesity is a disease. Don't think आप overweight है, आपको कोई बीमारी नहीं, तो आप बीमार नहीं हैं. Obesity is a disease which is a root cause of various multiple conditions. बच्चे आजकल मुझे मिलते हैं 65-70 किलो के, और नॉट मेंट टू, एंड देन यू क्वेश्चन मुझे क्यों हो गया बीमारी. अरे मोटापा बहुत बड़ा कारण है बीमारी. The adipose cells that are there in our body, that creates havoc with your hormonal rhythms. I have like kids as young as 16 having PCOD. उसके पेरेंट्स मुझे बोलते हैं इसको कैसे हो गया. मतलब वजन तो देखो उसका यार, उसकी हाइट के हिसाब से वजन 45 किलो होना चाहिए, वो 60 किलो की है, तो उसको हो गया. वजन नीचे लाओ, 90% प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. We don't consider these things as diseases. These are the root cause. Stress again is a big root cause of most of the diseases. So God's sake, don't put stress on yourself. Don't stress out your kids. कि उसके future क्या क्या होगा. God is there to take care of us. Have this faith that everything will be sorted. Don't take stress. It activates your sympathetic nervous system जो हमने सीखा आज. Stress is a major activator of SMS. It's a fight or flight response in your body, which creates havoc. अब एक दिन में तो स्ट्रेस कम होगा नहीं. ऑब्वियसली यू नीड टू लाइक टेक सर्टन मे बी काउंसलिंग, टेक सर्टन गाइडेंस, फॉलो गुड रूटीन जो हम क्लासेस में फॉलो कर रहे हैं. आई कैन सी पीपल इन माय स्टूडेंट्स कैसे उनका स्ट्रेस लेवल्स कम हो गया, कैसे उनकी बीमारियां रिवर्स हो रही है. कैन यू लिसन टू दिस गुड. बोलते ना कि कार्व आउट अ रूटीन फॉर योरसेल्फ. मैं तो बोलता हूँ बिकम योर ओन प्लेसिबो. आज मैंने क्या किया, आप सबका प्लेसिबो इफेक्ट मैंने एक्टिवेट कर दिया. आई एम बिकमिंग अ प्लेसिबो फॉर यू टुडे बाय एक्सप्लेनिंग द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स. Go deep into this. जैसे विशाल ने बोला ना, can I read this book? Yes, you should. These kind of books, these kind of videos मैं जो ग्रुप में शेयर करता हूँ. मैंने जो कल क्यों शेयर किया, मैंने द ब्रेन बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो अंजना आंटी रेड दैट, सो शी विल नो नाउ कि एक्सरसाइजिंग से खाली मेरा डायबिटीज एंड बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज. गो थ्रू दिस वीडियो, स्टडी दिस वीडियोस. ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करेंगे तो ही हमें स्टडी करना है. इट्स अ ड्यूटी. इट्स योर ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग टू नो अबाउट योरसेल्फ. And just like I healed myself, विशाल did himself, रीटा भाभी ने ठीक किया, बिमल भाई ने ठीक किया, आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं. बट आप गलत चीज करना तो बंद करिए. आप इन द नेम ऑफ मुझ पे कंट्रोल नहीं है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता, तो बीमारियां लो. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर्स इन इंडिया. हम जो सीखा था 67 साल में आदमी चला जाता है. तो जो 50 के हो गए, आपके ज्यादा समय नहीं है, बदल जाओ अभी भी. 7 महीने में शरीर बदल जाता है. डोंट थिंक दैट कॉन्स्टिपेशन ये ना खाली क्या होता है ठीक हो जाएगा. नहीं, जस्ट सिग्नलिंग. डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहा है कुछ तो गड़बड़ है भैया, सुधर जाओ अभी. कॉन्स्टिपेशन से ही आईबीएस होता है, आईबीएस से आईबीडी होता है, आईबीडी से कैंसर होता है. ओके, इट नथिंग हैपेंस बाय चांस. देयर आर वेरी फ्यू अनलकी पीपल आई वुड से जिनको बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न हेल्दी. मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न विद अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें हमारा शरीर अपने आप सब कुछ ठीक रखता है. तो हमने उसमें कचरा डालना चालू किया. बच्चा है, बच्चा तो खाएगा ही थोड़ा यार. बच्चे को क्यों रोक रहे हो खाने से यार, बच्चे को तो खाने दो, वो तो पचा लेता है. अरे पचा लेता है क्योंकि उसका डाइजेशन स्ट्रांग है उस समय. हमें उसका डाइजेशन वीक करते हैं बचपन से. जब 25 साल का होता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को डायबिटीज क्यों हो गया, मेरे बच्चे को बैक पेन क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे को ये क्यों हो रहा है, मुझे उससे क्यों आर्थराइटिस हो गया, उसको क्यों लूपस हो गया. हम गलत चीजें, हम गलत. आप पेट्रोल गाड़ी में कभी डीजल डालेंगे क्या, बताइए. विल यू एवर पुट पेट्रोल इनटू अ डीजल कार? 5 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी है, नहीं डालते हैं. दिस बॉडी इज इनवैल्यूएबल. यू कैन नॉट बाय दिस बॉडी. यू कैन बाय मेडिसिन, यू कैन बाय अ हॉस्पिटल बेड, बट यू कैन नॉट बाय हेल्थ. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ईट मोर ऑफ नेचुरल फूड्स. ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रॉ डाइट पे चले जाइए, डोंट डू दैट. बट एटलीस्ट 80% ऑफ योर डाइट, 80% तो आप सही खाइए. आप पहले शुरुआत करिए 80% से. योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स. डोंट dig your own grave with your own mouth by eating at the wrong time, by eating the wrong foods, by not exercising, by not sleeping on time. क्यों बोलता हूँ मैं 9-10 बजे आप सो जाओ, क्यों बोलता हूँ? there is a hormone called melatonin that gets secreted between 9 and 11 p.m. तब वो सेक्रेट होता है, तब शरीर बोल रहा है भैया मुझे रेस्ट चाहिए, मैंने आज काफी मेहनत कर ली, मुझे अब रेस्ट दो. हमें तो पार्टी करनी है, हमें सोशल मीडिया देखना है, हमें घूमने जाना है यार, फ्रेंड्स बुरा मान जाएंगे. अरे आपका शरीर का पहले सोचो. मैं बोलता हूँ थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट. बिकम सेल्फिश इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. Everything will be taken care of.
and then see how you heal yourself. Yeah, Harpreet, you had a question. I have this much to share today. You have No, a so it question? got eventually answered, because my question was that when kids talk about two things majorly about protein shakes, जो भी जाता है जिम उसको लगता है प्रोटीन शेक्स हमारे सर ने बोल दिया तो बस वो तो लेना ही लेना है. And even the school where I'm going, Guru Nanak High School also, there also kids are like, "Ma'am, मैं protein shake लेता हूँ." So I said, "There's nothing healthy about it." And second thing is that हाँ वो रात को सोते ही 12-1 बजे, next day खाते 2-3 बजे हैं, तो they said हमारा तो हो गया intermittent fasting. But yeah, it has to be go parallel with the circadian cycle of the nature. So most of the kids I'm just telling, first go and Google about circadian cycle, because they have never heard it. Even I heard it, I think 8 years back. So उससे पहले मुझे भी नहीं पता था. So yeah. See, मैंने भी बहुत प्रोटीन पाउडर्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूटामीन, BCAA, मील रिप्लेसमेंट शेक्स, मैंने सारे पाप किए. ओके, एंड आई न्यू दैट जब साइड इफेक्ट्स चालू होते हैं ना, इट क्रिएट्स हैवक इन योर बॉडी. ओके, सो प्लीज अगर आप ले रहे हैं, आपके बच्चे ले रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल करना है, बिकॉज उनके माइंड में बैठा देगा ना प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, यू नीड प्रोटीन इन एवरी मील, यू नीड 2 grams ऑफ प्रोटीन पर कीजिए. मैंने पापड़ पेले हैं. ओके, आई हैव कंसल्टेड द बेस्ट ऑफ डाइटिशियंस इन इंडिया, Gauri Murthy, and who is the dietitian to most of the film stars and everything. She charged me a bomb for her consultation, and she was like, put me on so many supplements and so many this thing, and that led to my autoimmune condition, and it creates havoc. Because थिंक लॉजिकली यार, भगवान ने इसके लिए नहीं बनाया मैं पाउडर खाने के लिए. कौन सा, सी इफ यू वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. अगर हमारा गोल है ना हमें सलमान खान बनना है या अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. यू आर राइट कि हमें दैट, बिकॉज यू हैव टू सेल योर बॉडी. सलमान खान क्या करता है, ही सेलिंग हिज बॉडी. अगर उसका डोले शोले नहीं होंगे, कौन देखने आएगा सलमान खान? ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ. हेल्थ इज सेकेंडरी फॉर हिम. हिज प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इज हिज बॉडी. अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. जिम ट्रेनर्स क्या होते हैं, उनको भी कंडीशन कर दिया गया है कि मेरे क्लाइंट को इतना प्रोटीन चाहिए. क्या उसका मेडिकल बैकग्राउंड है वो तो देखो, उसको एक बॉडी पार्ट का नाम पूछो, उसको पैंक्रियास पता भी नहीं होगा, पैंक्रियास व्हाट आर दी एनर्जी सोर्सेज, उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से एनर्जी सोर्स आ रहा है. बोलेंगे मसल लॉस चालू हो जाएगा. इसको लोग, हाउ पीपल लाइक मिसगाइड अस. मसल लॉस नहीं हो रहा है, वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन स्टोर्ड है वो यूज हो रहा है आपका. 9 क्या बोला डॉक्टर लिविट्स्की ने, 99.9% ऑफ पीपल हैव protein sources that will last for a month. Don't worry about these foolish things. Do simple. मैं तो बोलता हूँ 12, start with 12 hour fasting, gradually move on to 14 to 16 as per your capacity. You are good to go. You don't need to go extra. But अगर कोई वैसी बीमारी है आपको, like जो मैंने बीमारियों का नाम लिया, under the guidance of a health coach or a doctor or someone holistic healing में जो believe करता है, go up to 16 hours. बेस्ट वुड बी 18 hours. तो करना है आपको, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन. डोंट डू इट अलोन, बिकॉज न्यूट्रिशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सेल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सबको सेल्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए. ये मत सोचिए कि न्यूट्रिशन नहीं चाहिए. वी नीड गुड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आल्सो विटामिन्स, मिनरल्स. दोस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. Okay, so I'll just stop the recording now.